Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 12th problem of final account intermediate first year. Now let us begin with our problem. It is telling that prepare balance sheet of Karnakar Reddy Traders from the following as on 31/12/2017. So we need to extract two information for our heading. पहली है name of the business, that is Karnakar Reddy Traders, and the date of year 31/12/2017. So the heading of balance sheet will be balance sheet of Mrs. Karnakar Reddy Traders as on, balance sheet में as on आता, always remember this, 31st December 2017. Now we are having two sides. First we will begin with liability side, और liability side का पहला item आता capital. So before writing capital, we need to search for any profit or loss. अगर प्रॉफिट मेंशन है तो कैपिटल को ऐड करो, अगर लॉस मेंशन है तो कैपिटल में से माइनस करो. इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, सो directly we'll write the amount of capital in the outer column, that is rupees 1,65,000, and you can see 1,65,000 here. Then after that, let us begin from the beginning. Creditors is our liability. Directly we'll move towards the liability side and we'll write creditors. Closing stock is our asset. Capital we have already taken. Canara Bank loan, this is loan from Canara Bank. Loan मतलब ये हम क्या करें, कर्जा लिए, किसके पास है, कैनरा बैंक के पास. तो ये कैनरा बैंक को पे करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नथिंग बट अवर लाइबिलिटी. So we'll move towards the liability side and we'll write loan from Canara Bank, that is 75,000. Then after that, the next liability is outstanding salaries. अब इसका सिंपल मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़े हुए हैं, कौन, एम्प्लॉइज. कई क्या से सैलरी दियो बोल के, कई को आप सैलरी नहीं पे करें, आपको सैलरी पे करना है, आप सैलरी बाकी है. सो outstanding salary is nothing but our responsibility to pay. Responsibility to pay is nothing but liability. So directly we'll move towards the liability side in the balance sheet and we'll write outstanding salaries 17,000. Now we'll move towards the asset side. Asset क्या है, the things on which we claim our ownership. Number one, we can observe that is closing stock, and what we need to do, we need to take closing stock as our last item of asset. Asset का आखिरी आइटम क्लोजिंग स्टॉक लिखना. कई को बिकॉज द स्टॉक इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसीलिए हम लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंसीडर करते. नाउ मशीनरी इज आवर एसेट, सो वील मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड एंड राइट मशीनरी 1,15,000. द नेक्स्ट एसेट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज 75,000. सो we'll write investment on the asset side 75,000. The next asset is debtors. debtors मतलब हम उधार पे गुड्स बेचे, किसको, कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर्स के पास से हमारे पैसे आना है, हमारा पैसा हमारा एसेट. सो डायरेक्टली we'll move towards the debit side and we'll write asset side and we'll write debtors, that is 38,000. Then after that we can see furniture. Furniture is our asset. Asset को हमेशा asset side लिखना बैलेंस शीट में, furniture. Then the next item is goodwill. goodwill है क्या, goodwill is our intangible asset. intangible मतलब ना हम इसको देख सकते ना छू सकते, राइट, मगर ये हमारा रहता. What is goodwill? The value of reputation of business in the market. आपके बिजनेस की इज्जत की वैल्यू मार्केट में कितनी है, मतलब आपके बिजनेस का नाम कितना है, फेम कितना है मार्केट में, नाम से कस्टमर्स आते. सो दैट नेम व्हेन इट इज रजिस्टर्ड, आप अपने नाम से उसको रजिस्टर करा लेंगे, दैट इज योर इनटैंजिबल एसेट, और जिसको हम गुडविल बोल रहे हैं. सो विल राइट
goodwill on the asset side because that is our intangible asset. Then after that, the last item is closing stock, that is 12,000. अब कुछ भी करना नहीं है, जस्ट डू टोटल, और दोनों का टोटल बराबर आया तो बैलेंस शीट हमारी टैली हुई, नहीं आया तो बैलेंस शीट टैली नहीं हुई. सो द टोटल ऑफ the asset side, the liability side is, sorry, asset side is 2,78,000. Similarly, 2,78,000 on both sides. From this, we have completed the 12th problem of final account from Intermediate First Year Accountancy. Next video, we are going to cover 13th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.